Okay, Assalamu alaikum. Today's topic that we are going to discuss is risk and uncertainty. Before we move on to the topic, we have to understand that these two words, the risk and uncertainty, are two different margins in F5 terms and we cannot use them interchangeably. So first we will discuss what is risk. Risk is basically something that may or may not occur. Means we have some probabilities, some chances estimated here. For example, there is a risk that the inflation rate will increase in future or the interest rate will increase in future. So there is a possibility that either it will increase or decrease. Okay? This is what risk is. However, uncertainty is basically you cannot estimate any outcome. क्या मतलब होता है that something you do not know what is going to happen in future and you are completely unsure about what will happen or about the outcome. For example, if a business is launching a new product, तो they do not know कि उस product का response किस तरीके से consumers करते हैं. So uncertainty is a situation where outcome cannot be easily estimated or it cannot be estimated. So because these two concepts are different concepts, therefore we are going to deal with them differently. So सबसे पहले we are going to discuss how businesses reduce uncertainty. ठीक है. अनसर्टेनिटी का मतलब होता है देयर इज़ नो आउटकम दैट कैन बी एस्टिमेटेड. तो सबसे पहले व्हाट यू कैन डू, यू कैन सिंपली डू सम रिसर्च टेक्निक आप यूज़ कर सकते हो टू एनालाइज एटलीस्ट लोग किस तरह से रिएक्ट करेंगे. एटलीस्ट कुछ आइडिया हो जाए कि इससे पहले अगर कोई ऐसा काम हुआ है या ऐसे कोई चीज़ हुई है तो उसका क्या रिएक्शन था. सो यू कैन अंडरस्टैंड, यू कैन एटलीस्ट प्रेडिक्ट सम ऑफ योर आउटकम एज वेल. इसमें आपके पास आता है मार्केट रिसर्च. आपको ये कैसे हेल्प करता है, हाउ डज this helps in tackling problems. रिसर्च करके देखते हैं कि अगर इसी टाइप की प्रॉब्लम किसी और ने पहले फेस की हुई है या आपके बिजनेस ने पहले फेस की हुई है तो हाउ डिड यू टैकल इट. सो once you have the knowledge, once you have the information about something, so you can estimate कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है in your outcome and if there is some uncertainty or if there is something that you do not know, so how will you tackle that problem as well. Second, it is a planning and decision making tool. Definitely research is a planning and decision making tool. And you get to know the needs and preferences or simply the opinions of customers. So once you are taking any decision, when a business is taking any decision, उनके लिए सबसे important उनके customers ही होते हैं. So when you do market research, you get to know the preferences of your customers or for what do they want, what do they think about your decision, what are their opinions and what do they suggest you to do in as an alternative. Okay, now these were the techniques that can be used to reduce uncertainty. Now we are moving on to the risk because this chapter is basically based on risk. Mostly this chapter comprises of risk और हम risk की बात करेंगे. So before we move on to risk, we have to discuss 3 attitudes to risk preferences. How people perceive risk. This is how we are going to discuss. There are a lot of people that are risk seekers.
Who are risk seekers? Risk seekers are those people that are optimistic people. And what do they do? That the manager is willing to take more risk with the hope of earning high returns. अच्छा, यहाँ पे भी have to ignore probability. ठीक है. Who are those risk seeker people? Risk seeker people are those people जिनका perception ये होता है that the higher the risk, the better the return, the greater the return. तो जितना बड़ा risk होगा उतना बड़ा return होगा. Okay, so these people are willing to take decisions that are risky decisions. बहुत सारे risky steps ये लोग consider करते हैं अपने decisions के अंदर, because these people assume that जितना risk हम लेंगे हमें उतना return मिलेगा. So it's like a 50-50 situation. Either there is a return, a higher return, or the risk can lead you to a loss as well. But what they consider is कि भाई जो best higher return है that we are going to take because that contains higher risk as well. So they are people who welcome the risk in their decisions. Second type of people or second type of preference towards risk is risk averse people, risk averse managers. These are the people with a pessimistic personality. ठीक है. यहाँ पे क्या होता है that the manager is quite afraid of taking risk. ठीक है. एंड कंसिडर्स द वर्स्ट आउटकम्स. ऊपर वाले में वो पॉजिटिव आउटकम्स देख रहा था, सारी अच्छी पॉजिटिव बातें देख रहा था. अ रिस्क सीकर मैनेजर, हाउएवर अ रिस्क अवर्स मैनेजर इज द वन हु इज गोइंग टू कंसीडर ऑल द नेगेटिव आउटकम, कि बुरा क्या क्या हो सकता है. और किस हद तक बुरा हो सकता है, कि मतलब कुछ बुरा हो रहा है तो कितना बुरा हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या बुरा हो सकता है इन द डिसीजन. हर चीज़ मतलब कोई भी डिसीजन होगा उसकी नेगेटिव एस्पेक्ट्स पहले देखेंगे एंड उसी की बेसिस पे हम डिसीजन लेंगे कि जिसके कम नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं हम वो डिसीजन ज़्यादा प्रेफरेबल हमारे लिए होगा इन अ रिस्क अवर्स एटीट्यूड. बट इफ़ वी आर रिस्क सीकर्स देन हमारा एटीट्यूड ये होगा दैट हम सिर्फ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लेंगे और जिसके सबसे ज़्यादा पॉजिटिव एस्पेक्ट है, हाईएस्ट पॉजिटिव एस्पेक्ट है, वी आर गोइंग टू टेक दैट डिसीजन. Then we have a third type of personality that is risk neutral. Okay, or the above two ignore probability, कि वो आउटकम की प्रोबेबिलिटी क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव आउटकम की प्रोबेबिलिटी को नहीं कंसिडर करते. दे जस्ट कंसिडर द अमाउंट और दे जस्ट कंसिडर द वैल्यू or the occurrence, if it is or if it is not. The third type of people are risk neutral people. ये होते हैं बैलेंस्ड अप्रोच वाले, ना ऑप्टिमिस्टिक है बहुत ज़्यादा, ना बहुत ज़्यादा पेसिमिस्टिक है, ना कि हर चीज़ की सिर्फ पॉजिटिव साइड देख रहे हैं, ना हर चीज़ की नेगेटिव साइड देख रहे हैं. ये लोग क्या करते हैं, दीज मैनेजर्स आर नाइदर सीकर्स नॉर अवर्सर्स. व्हाट दे आर, दे कंसीडर प्रोबेबिलिटी in decision and work along EVs, expected values, that we did in decision trees as well. अच्छा, so these are the type of people जो आपका basically logic पे काम करते हैं. they work on calculations rather than taking the risk or taking the or not taking the risk. So these are the risk neutral people. Now in your paper you can be asked in a way कि वो आपको बता दे कि ये आपका ये these are the outcomes and this is the attitude of a person towards risk. So you have to decide based on the outcome. Therefore it is important for all of you to know what are the risk attitudes or risk preferences, so you can simply take the decisions based on that. Okay,
एक चीज़ होती है इन रिस्क इन अनसर्टिनिटी, एक चीज़ होती है दैट वी कॉल इट एज अ पे ऑफ टेबल. Payoff table is basically a table or a matrix that shows returns of the decision making options. ठीक है. अब एक पे ऑफ टेबल जो होता है इट कंसिस्ट ऑफ 2 डायमेंशंस होती हैं इसकी. 2 तरीके से हम इसको कंसीडर कर रहे होते हैं. बेसिकली हम एक पे ऑफ टेबल में 2 चीज़ों को कंबाइन करके 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन प्रेजेंट करते हैं. एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं कंट्रोलेबल फैक्टर्स. फॉर एग्जाम्पल controllable factor. Basically this is the decision that you can control. ये आपकी चॉइस होती है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो. दैट इज इन योर हैंड्स. एंड द अदर थिंग दैट इज अनकंट्रोलेबल फैक्टर. इसके ऊपर हमारी परसेंटेज लगती है. Basically the probabilities is uncontrollable factor के होते हैं. जैसे for example when we talk about inflation, we talk about market going down, or if we talk about exchange rate, तो ये चीज़ें एक single firm के लिए uncontrollable factors होती हैं. So your decision is going to depend upon uncontrollable factors, but because your decision is a choice for you, you can either take it or you can choose an alternative decision. That is why it is an it is a controllable factor. एक एग्जांपल देखते हैं डिसीजन मेकिंग मैट्रिक्स की. दैट मार्केट टॉप होगी मींस मार्केट इज गोइंग टू परफॉर्म बेटर, और मार्केट डाउन होगी. सो दिस इज द अनकंट्रोलेबल फैक्टर कि मार्केट का टॉप होना या डाउन होना. उसके परसेंटेजेस आपको बता देते हैं. फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ 60% चांस दैट द मार्केट विल बी अप एंड अ 40% चांस दैट द मार्केट विल बी डाउन. नाउ आप क्या कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शंस ये हैं. यू कैन आइदर प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2. सो if there is an up market or a top market, your project 1 is going to give you a positive return of 50,000. And if there is a down market, it is going to give you a return of 12,000 positive. ठीक है. However, if you take project 2 and the market is up or top, it is going to give you a return of 25,000. And if the market is down, it is going to give you a loss of negative 10,000. So this is a type of a payoff table जो आपको ये बताता है कि अगर आप मतलब आपकी जो सारा डेटा है उसको उसने एक तरीके से अरेंज करके आपको बता दिया कि दैट दिस इज गोइंग टू बी दी आउटकम एंड दिस इज गोइंग टू हैपन इफ यू आर गोइंग टू टेक अ डिसीजन. अच्छा, जो प्रोबेबिलिटीज और चांसेस होते हैं दे आर ऑल गोइंग टू फॉर्म 100% इन टोटल. इससे कम और इससे ज़्यादा नहीं हो सकता. ठीक है. In question in your paper you may be asked to construct a payoff table. उसके लिए what you have to do is you have to understand कि controllable factors कौन से हैं और uncontrollable factors कौन से हैं. So let's do an example of constructing a payoff table first, and then we will move on to the other parts. Okay. For example, that a company has to decide selling price per unit. हमें selling price per unit decide करनी है और हमारे पास 2 options हैं. Either we can choose 90% per unit, $90 per unit, or we can use $98 per unit. अच्छा, अब थोड़ा डाटा गिवन है. डाटा सेज दैट एट selling price 90 your demand is going to be 500 units.
ठीक है. Your at selling price 98, your demand is going to be 430 units. अच्छा, अब जो uncontrollable factor, that is the company is unsure about variable cost, उसके नज़दीक जो है वो there is कि वेरिएबल कॉस्ट 40 हो सकती है, वेरिएबल कॉस्ट कैन बी 42 or it can be 43 as well. So there are 3 variable costs that can occur. The chances are कि 40 variable cost होगी, the chances are 70%, 20 होगी, the chances are 20%, and 43 होगी, the chances are 10%. So by our analysis that we discussed earlier, what is the uncontrollable factor here? The uncontrollable factor is basically the factor that is not in the control of the business, और उसके कुछ chances और उसके ऊपर probability apply हुई भी है. So variable cost is the uncontrollable factor in this question, whereas the selling price is the controllable factor, because you cannot decide your variable cost, but you have the option, you have the choice to decide on the selling price. So how are we going to construct a payoff table? Payoff table में definitely we are going to construct a return. अब return में हमारे पास देखो how many outcomes we are going to have. Outcomes कैसे आते हैं? In number of outcomes होते हैं controllable options into uncontrollable options. हमारा कंट्रोलेबल ऑप्शन क्या है, कितने हैं हमारे पास? 2, बिकॉज वी कैन आइदर चूज सेलिंग प्राइस 90 और वी कैन आइदर चूज सेलिंग प्राइस 98, बट वी हैव 3 अनकंट्रोलेबल ऑप्शंस. क्यों? वी हैव 1 अनकंट्रोलेबल ऑप्शन, 2 एंड 3. ये 3 अकरेंसेस हो सकती हैं जिनकी प्रोबेबिलिटीज गिवन है. सो दे आर 3 एंड 2 कंट्रोलेबल ऑप्शन. सबसे पहला सेलिंग प्राइस 90 और 98, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वी आर गोइंग टू गेट टोटल 6 आउटकम्स. ओके, सो 6 आउटकम्स हम कैसे निकालेंगे? वी आर गोइंग टू सिंपली टेक द कंट्रीब्यूशन का आउटकम, या पे ऑफ मीन्स योर रिटर्न. सो एट सेलिंग प्राइस 90 and if your variable cost is 40, variable cost 42 and variable cost 43, हमारा रिटर्न कितना होगा? इफ इट इज सेलिंग प्राइस वेरिएबल कॉस्ट 40, सो योर कंट्रीब्यूशन विल बी 90 माइनस 40 पर यूनिट, और हमारी डिमांड वाज 500 यूनिट्स, सो इट इज गोइंग टू बी 25,000. ठीक है. इफ इट इज 42, सो वी विल हैव $24,000 as a return. And lastly, if it is 43, we will have 23,500 in return. Similarly, हम 98 प्राइस पे भी यही करेंगे. ठीक है. We have variable cost 40, we have variable cost 42 and we have variable cost 43. ठीक है. So 98 minus 40 and we knew कि demand 430 है, so we are going to multiply it by 430. हमारे पास आ जाएगा 24940. Okay, if you have variable cost is 42, your return will be 24080, and for variable cost 43 we will have a return as 23650. So we can see कि हमने 2 आउटकम्स लिए, 2 ऑप्शंस हमारे डिसीजन के लिए, 3 आउटकम्स उनके कंसिडर किए फॉर ईच डिसीजन. सो वी गॉट टोटल ऑफ 6 आउटकम्स. 1 2 3 4 5 एंड 6. तो ये हमारे 6 आउटकम्स निकल के आ गए. नाउ अब हम इसको पे ऑफ टेबल में कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे? हम इसको पे ऑफ टेबल में ऐसे इनकॉर्पोरेट करेंगे कि वी विल फर्स्ट सी द, वी विल ऑन द वाई एक्सिस वी आर गोइंग टू लेबल द अनकंट्रोलेबल ऑप्शन, दैट वाज द वेरिएबल कॉस्ट. एक था $40,
एक था 42 एंड एक था 43. ठीक है, और हमारे दो ऑप्शन क्या थे, आइदर वी आर गोइंग टू चार्ज $90 और वी आर गोइंग टू चार्ज $98. ठीक है, probabilities were 0.7, that was 70%. We have 0.2 and we had 0.1. ठीक है, so the total of probabilities is 1 again. अच्छा, अगर हमने सेलिंग प्राइस 90 चार्ज करी और वेरिएबल कॉस्ट 40 थी, so we had the outcome of 25,000 or the payoff of 25,000. If 24,000 and 23,500. And lastly 23650. So this is how you are supposed to construct your decision payoff table. ठीक है, इसकी कंस्ट्रक्शन आपके पेपर में आ सकती है, so that is why I have taught this as well. Okay, let's move on to the decision techniques now. Risk averse, risk pro means risk pro or risk seeker, you can say risk averse, and the neutral manager, how are they going to take decisions. सबसे पहली टेक्निक होती है हमारे पास मैक्सिमैक्स टेक्निक. मैक्सिमैक्स टेक्निक होती है फॉर अ पर्सन हु इज अ रिस्क सीकर. ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, दिस टेक्निक identifies all the best outcomes सारे आउटकम्स में से सिर्फ बेस्ट आउटकम्स आइडेंटिफाई करती है एंड सिलेक्ट्स द बेस्ट फ्रॉम ऑल द बेस्ट. क्या मतलब है, ये टेक्निक बोलती है कि सारे जो बेस्ट आउटकम्स हैं हमने वो उठा लिए और अब जो बेस्ट आउटकम्स में हैं उनमें से जो बेस्ट है वो उठाएंगे. वंस वी आर डन विद द टेक्निक, सो वी विल डू एन एग्जांपल, तो ये और क्लियर हो जाएगा कि मैक्सिमैक्स टेक्निक कैसे करते हैं. द सेकंड टेक्निक इज मैक्सी मिन. टेक्निक, दिस टेक्निक इज अगेन फॉर अ रिस्क अवर्स मैनेजर, जिसके लिए रिस्क जो है वो अच्छी चीज़ नहीं है, जो उसको पेसिमिस्टिकली देखता है और वो वर्स्ट पॉसिबल आउटकम्स को सोचता है. सो द टेक्निक दैट दे आर गोइंग टू यूज इज, व्हाट आर दे गोइंग टू डू इज मैक्सिमम टेक्निक यूज़ करेंगे. एंड मैक्सिमम टेक्निक कैसे होती है, मैक्सिमम टेक्निक ऐसे होती है दैट आइडेंटिफाइज ऑल द वर्स्ट आउटकम्स, के इतना क्या क्या बुरा हो सकता है, एंड देन सिलेक्ट्स द बेस्ट फ्रॉम ऑल द वर्स्ट. यानी कि ये कहता है कि अगर हमारे पास दो ऑप्शंस हैं कि हमारा लॉस हो जाए 5,000 का या लॉस हो जाए 10,000 का, तो अब ये दो नेगेटिव आउटकम्स हमने निकाल लिए. अब इन दोनों में से जो बेहतर है वो ये कि 5,000 का लॉस हम बर्दाश्त कर लेंगे, 10,000 का नहीं करेंगे. सो दे आर गोइंग टू चूज द 5,000 वाला ऑप्शन और 5,000 वाला डिसीजन. ओके, द थर्ड टेक्निक इज द EV टेक्निक और सिंपली यू कैन से एक्सपेक्टेड वैल्यू टेक्निक. This technique is for a risk neutral manager. ये क्या करता है, this calculates the expected values
all the decisions and choose the options bearing the हाईएस्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू. सारे ऑप्शंस की एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करके जिसकी सबसे हाईएस्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू आ रही होती है, वी आर गोइंग टू चूज दैट ऑप्शन. सो फर्स्ट वी विल डू एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड क्लियरली कि ये सारी टेक्निक्स कैसे अप्लाई हो रही होती हैं. ओके, सो आवर एग्जांपल इज दैट मार्केट टॉप means market is going to be in a good condition or top, and in a bad condition, that is down. Percentages 70%, 30%. ठीक है. Project 1, Project 2. If the market is in top and your Project 1 is chosen, you will get an outcome of 12,600. If it is down, you will get an negative outcome of 20,000, negative return or a loss of 20,000. If you choose Project 2, your positive outcome is going to be 9,200 if your market is top and 6,800 if your market is down. How are we going to solve it? अच्छा, अब सबसे पहले हम डिसीजन लेंगे using the Maximax rule. मैक्सीमैक्स रूल ने क्या कहा था कि बेस्ट आउटकम उठा लो और बेस्ट में से बेस्ट सिलेक्ट करो, राइट. सो प्रोजेक्ट 1 का बेस्ट आउटकम क्या है हमारे पास? प्रोजेक्ट 1 अगर हम चूज करें तो आइदर वी विल हैव अ प्रॉफिट ऑफ 12,600 और अ लॉस ऑफ 20,000. सो द बेस्ट इज 12,600 का प्रॉफिट. ठीक है. अब प्रोजेक्ट 2 उठाए तो वी विल गेट द बेस्ट आउटकम ऑफ 9,200 एंड द वर्स्ट आउटकम ऑफ 6,800. सो प्रोजेक्ट 2 का हमने बेस्ट ले लिया 9,200. अब ये जो दो बेस्ट हैं इनमें से भी बेस्ट देखेंगे. सो the 12,600 is the best one. So a risk pro or a risk seeker will go for project 1 because this is the controllable option. Okay, now let's move on to the second rule, that is maximin, जिसमें से हम worst outcomes में से best पकड़ते हैं. maximin वाला क्या कहता है? maximin वाला बोलेगा सबके worst outcomes उठाओ. सो प्रोजेक्ट 1 का वर्स्ट आउटकम, अच्छा इसमें हम लोग प्रोबेबिलिटीज नहीं देखते बिकॉज दीज पीपल डू नॉट कंसीडर द प्रोबेबिलिटीज सिर्फ एक्सपेक्टेड वैल्यू वाला कंसीडर करता है. सो द वर्स्ट आउटकम फॉर प्रोजेक्ट 1 वुड बी नेगेटिव 20,000, इतना लॉस हो सकता है. एंड द वर्स्ट आउटकम फॉर प्रोजेक्ट 2 इज 6,800 का प्रॉफिट. सो अब इन दोनों में से बेहतर क्या है? दैट वी कैन चूज दिस ऑप्शन बिकॉज दिस इज द बेस्ट अमंग्स द वर्स्ट. सो अ रिस्क अवर्स पर्सन will choose project 2. Okay, so let's move on to the third option, that is the expected value option. We are going to calculate the expected values of both the options, both the projects. Project 1 की expected value कैसे आएगी? Project 1 की expected value will be 12,600 हमारा आउटकम और उसकी प्रोबेबिलिटी थी 0.7 और 70% माइनस 20,000 इंटू 0.3 माइनस इसलिए बिकॉज इट्स अ लॉस. देयरफॉर द टोटल एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट 1 इज $8,220. ऑलराइट, फॉर प्रोजेक्ट 2 द एक्सपेक्टेड वैल्यू इज 9,200 into 0.7 plus 6,800 into 0.3, which gives us the total expected value of 8,480. So a risk neutral, obviously a risk neutral person जिसका expected value की basis पे decision लेगा, it is going to that person is going to take the decision based on the highest expected value. So based on these two options, the highest expected value is 8,480, which means that a risk neutral
manager will select project 2. So 2 of the managers are going to go for project 2 and 1, a risk seeker, is going to take the risk and go for project 1. Alright. अब एक concept होता है that we call is regret. Regret is basically the opportunity lost by making a wrong decision. अच्छा, कैसे समझाऊं अब? हाँ, रिग्रेट ऐसे होता है कि फॉर एग्जाम्पल यू हैड प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, ठीक है. प्रोजेक्ट 1 प्रॉफिट एक्सपेक्टेड क्या था? प्रोजेक्ट 1 का प्रॉफिट वाज पॉजिटिव 1000 एंड इसका वाज 800. सो बेसिकली रिग्रेट का मतलब होता है कि जो आपने अगर रॉन्ग डिसीजन लिया है तो उसके आपने क्या अपॉर्चुनिटीज लूज की हैं. तो रिग्रेट की वैल्यू कैसे निकलती है? बेस्ट ऑप्शन माइनस सिलेक्टेड ऑप्शन. अब इन दोनों में से ये जो 2 ऑप्शन हमारे पास हैं, द बेस्ट ऑप्शन इज प्रोजेक्ट 1. ठीक है. सो इफ केस 1 हमने प्रोजेक्ट 1 ही सिलेक्ट किया है, आपका रिग्रेट कितना होगा? बेस्ट ऑप्शन 1000 माइनस सिलेक्टेड ऑप्शन 1000. सो योर रिग्रेट विल बी 0. But in other case, that is case number 2, if you selected option 2, project 2 select कर लिया, wrong decision, तो अब regret कितना होगा? Best option minus selected option, that is 800. So your regret will be 200. So this is how we calculate the value of a regret. तो regret की basis पे हमारे पास एक rule होता है जिसको हम कहते हैं minimax regret rule. एक ये भी डिसीजन मेकिंग चॉइस और टेक्निक होती है जिसको हम कहते हैं मिनिमैक्स रिग्रेट रूल. दिस एम्स टू मिनिमाइज द मैक्सिमम रिग्रेट. ये क्या है? ये मैक्सिमम रिग्रेट को मिनिमाइज करता है. सेकेंड, दिस टेक्निक इज फॉर द मैनेजर who took wrong decision in past. So the steps are, सबसे पहले आप क्या करो, कैलकुलेट द रिग्रेट वैल्यू. यहाँ पे वी आर गोइंग टू फॉलो uncontrollable options. Second, we are going to say find maximum regret, कि maximum regret आप कितना कर सकते हो. Here we are going to follow controllable values, and last select option where regret is minimum. Okay, एग्जाम्पल से देखते हैं.
for a clearer understanding. Okay, we have market good performing and bad performing. ठीक है जी. We have probabilities of 0.8 and 0.2. Project 1 is giving a return of 3000 and negative 500. Project 2 is giving a return of 1500 and negative 700. अब हम यहाँ पे रिग्रेट कैलकुलेट करेंगे. तो प्रोजेक्ट 1 के अंदर बेस्ट क्या है, बल्कि नहीं, हाँ, मार्केट टॉप है. टॉप मार्केट में बेहतर ऑप्शन क्या है, दैट यू शुड चूज 3000. ठीक है. सो दोनों में रिग्रेट कैसे कैलकुलेट होगा, रिग्रेट हो जाएगा 3000, दैट इज द बेस्ट ऑप्शन, माइनस सिलेक्टेड ऑप्शन 3000, द रिग्रेट विल बी 0. ठीक है. नाउ इफ यू चूज ऑप्शन project 2, your regret will be 3000, the best option, minus 1500, that is 1500 का regret. Okay, now if the market is down, ठीक है, market down है, तो हमारे लिए बेहतर ऑप्शन क्या है, that we should choose 700. ठीक है. So the regret here will be 700, that is the best option, minus the option chosen, that will give you a positive 1200 regret. And if the market is down and you choose the 700 option, so your regret will be again 0. ठीक है. So when we do the totals, the total regret for project A or project 1 will be 0 plus 1200, that is total regret of 1200. ठीक है. और इसका है 1500 प्लस 0, दैट इज 1500. ये हमने मैक्सिमम रिग्रेट कैलकुलेट कर लिया. सो द मैक्सिमम रिग्रेट इज 1500 एंड 1200 फॉर बोथ. अब हम इन दोनों में से जो मिनिमम रिग्रेट होगा वो चूज करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी 1200. ये हमारा मिनिमम रिग्रेट है. सो रिग्रेट इज मिनिमाइज्ड at 1200, therefore project 1 will be selected. So this is the minimax regret rule for decision making. Last cheese that concerns the risk and uncertainty section is the usage of decision trees. Decision trees are quite similar to expected values. Basically, these are a diagrammatic representation of all the possible outcomes. इनको कहते हैं payoffs. सारे payoffs का एक diagrammatic representation होता है. जो बाकी techniques थी, those were the matrix representation, and this is a diagrammatic representation. So we are going to draw from left to right. Starting point होता है box square, and branches जो होंगी they are going to be drawn using a circle. Decision making कैसे होगी? Once you are done with the drawing and construction of a decision tree, you are going to move on to the decision making. Decision making में हम use करते हैं roll back analysis. अब roll back analysis क्या होता है? Roll back analysis means calculating expected value from right to left. Draw हम left to right करते हैं, calculation हम right to left करते हैं. मीन्स के right side से start करके left side पे ख़त्म होता है till the decision option and then seeking the highest EV option.
highest EV ऑप्शन. अच्छा, इसकी एक एग्जाम्पल करेंगे सो यू विल हैव अ क्लियरर अंडरस्टैंडिंग के डिसीजन. Okay, so you have to decide what selling price to charge. ठीक है, you have an option of $70 and you have an option of $80. If you choose 70, your demand will be $100 units, and if you choose $80, your demand will be 89 units. ठीक है, your variable cost will be $30, which is an uncontrollable factor. There is a 70% chance it is going to be $30, and it can be $32 where there is a 30% chance. Your requirement is to construct a decision tree. So we will start, because the starting point is a box, so we will start with the square. This is the starting point. Now the first decision and the second decision. पहला decision क्या है? That we have to charge selling price as $70, and the second decision is the selling price of 80. If we charge selling price 70, our demand is going to be 100 units. And if we charge it as 80, our demand is going to be 89 units. Now, अब हमने selling price 70 charge करी, so we have एक uncontrollable factor which is variable cost of 30, जिसका chance है हमारा 0.7, that is 70%. And if we choose selling price 70, another chance is variable cost of 32, जिसके chances हैं 0.3. Okay, and the other option that we have is to charge selling price as 80. So we have another same variable cost 30 होगी तो 0.7, and if it is going to be variable cost is 32, so your option is going to be the probability is going to be 0.3. Now how are we going to calculate our contribution? Maybe we are going to do the same. 70 minus 30, which is 40, multiply by 100 units. So your contribution will be $4,000. That is, the return will be 4,000 for this option. Same हम यहाँ पे करेंगे 70 minus 32 multiply by 100, which is going to be 3800. ठीक है, ये आ गया आपके इस ऑप्शन की वैल्यू. अब इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे आएगी? यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस बिकॉज there is a 70% chance for this and a 3800, so there is a 30% chance for this. So expected value कैसे आएगी? 4000 multiplied by 0.7 plus 3800 multiplied by 0.3, which is going to give us an expected value of EV of 3940. यहाँ लिख दिया इसकी EV. Now similarly payoff हम इसका कैलकुलेट करेंगे. 80 minus 30 into 89 and 80 minus 32 into 89, which is going to give you 4440 above and 4272 here. इसके हम अगेन एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकालेंगे? 4440 होने का चांस है 70% प्लस 4272 होने का चांस है 30%. So the expected value is 4396.6. ये कैलकुलेटर से करके देख लेना, यही आंसर होगा. So based on the expected value, the higher EV is here. So we are going to choose selling price as $80. Based on the decision tree हम highest expected value choose करते हैं.
Okay, so this was the chapter of risk and uncertainty. I hope it was pretty clear to all of you. We will meet inshallah in the next video with another topic. Thank you. Allah Hafiz.